हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे लोगों, कैसे हो आप लोग। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ चेंज की हम बात कर रहे थे कल के लेक्चर में। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जैसे आपको परसेंटेज चेंज दे रखा है तो क्या करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं उस टाइप का, फिर अपन उसके एरिया में चेंज की बात करेंगे ना। अगर लेंथ में चेंज का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से क्वेश्चन करना है कि अगर लेंथ n टाइम्स कर दे तो न्यू रेजिस्टेंस n स्क्वायर l हो जाएगा, ये हमने बात की थी। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद उस टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, इफ लेंथ ऑफ अ वायर increase 300%, then new resistance becomes, कितना टाइम्स हो जाएगा। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R है तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपके पास में B, C एंड D। 4R, 3R, 16R, 9R। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे इसका हम डिस्कशन करते हैं। आपको जनरली दिया गया है कि आपकी लेंथ जो है ना 300 टाइम इंक्रीज कर दी गई है। अब लेंथ 300 टाइम इंक्रीज करने 300% इंक्रीज करने का मतलब क्या है। लेंथ L है उसका 100% इंक्रीज कर देना, यानी कितना परसेंट हो गया। L प्लस L का 300%। न्यू लेंथ मैं बता देता हूँ, न्यू लेंथ कितना हो गया है। L डैश इक्वल्स टू L प्लस L इंटू 300/100, इट मीन्स 4L लेंथ हो गया है ना। यानी न्यू लेंथ जो है 4 टाइम्स हो गया है। कितना टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स। तो न्यू हमें पता है R इक्वल्स टू ρL/A होता है। L कैपिटल ले लेते हैं तो R डैश कितना हो जाएगा, ρL डैश अपॉन A डैश। ओके, अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। मैंने आपको बताया है अगर लेंथ n टाइम्स इंक्रीज हो गई है तो आपके न्यू रेजिस्टेंस कितना होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। वो तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, लास्ट वाला लेक्चर देखना कि लेंथ 4 टाइम्स है तो क्रॉस सेक्शन A/4 हो जाएगा। वो चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अगर लेंथ L डैश हो गई है तो 4 टाइम्स हो गई तो नया रेजिस्टेंस जो न्यू रेजिस्टेंस है R डैश वो होता है n स्क्वायर R। सो 4 times 4 square into R, so the new resistance is 16R. Okay, so answer is option C. Now we are discussing about if whenever during stretching if there is change in radius, obviously change in radius change in radius is happen, but I am just saying that change in radius is given, not change in length is given. Okay, length of change in length is not given, but here change in radius is given. Then how to solve that type of question? So during stretching we know that length of wire increases but radius of wire decreases because cross section will decrease due to increase in length because volume of wire is constant. So we know that concept. What is concept here? The resistance of wire is R, resistance of wire is R. After stretching
stretching length of wire, radius of wire becomes 1 upon n time, because it will decrease during increases in length, because due to constant volume. Okay, after stretching, radius of wire decreases 1 by n times. So calculate new resistance. So calculate new resistance. Okay, what is new resistance? Now we are trying to solve it. Then we get that this wire is given of length L and cross section A, and the A is pi r square. Whenever we stretch it, then we get length of wire is L dash and cross section of wire is A dash, that is pi r by n whole square. We know that according to question, radius decreases 1 by n times, then the new radius is r by n. So according to conservation of volume, initial volume is A into L, means area into length. Volume is constant. Volume of wire is constant. If volume of wire is constant, then we get area into length, A into L, must be equals to A dash into L dash, according to previous question. A dash into L dash. So area is pi r square into length is L equals to A dash is pi r square by n square, pi r square by n square into L dash. Then we get pi r square cancel out, so we get L dash becomes n square L. Equation number 1. New length becomes n square L. Okay, so new length becomes n square times whenever radius decreases n times. Okay, then new resistance is R dash equals to initial rho L dash by A dash. Rho L dash by A dash. Okay. Put the value of L dash and A dash from here. A dash is pi r by n ka whole square and L dash is n square L. Then we get R dash equals to rho n square L upon pi r square by n square. We know that what we know, R is equals to rho L by A, means rho L by pi r square. So we get n for rho L upon A, rho L upon pi r square. Okay, rho L upon pi r square, that is resistance of wire, initial resistance. So new resistance is n raised to power 4 r. R dash equals to n raised to power 4 into r. Whenever we stretch and there is change in radius, then new resistance becomes n raised to power 4 r. See it? Is there any doubt in that question? Otherwise, I'm just rubbing it. You have to know that equation, R dash equals to n by 4 r.
Oh, wait. Okay. Okay. So question based on that concept is resistance of a wire, resistance of a resistor is 2 ohm. After stretching, its length radius becomes 1/2 times. After stretching, its resistance becomes 1/2 times. The resistance after stretching is the resistance of resistor after stretching. The resistance of resistor after stretching is okay. That is I'm creating just options. 2 ohm, option B 4 ohm, option C 16 ohm, option D 32 ohm. Okay, just see the question, then tell me what is the answer. Solve it. What is the answer? Solve that. Put the formula R dash equals to n raised to power 4 R. You can solve this question by that concept, then you get final answer of question. This is a very easy question. You can solve it. I'm just seeing that. So the new answer is R dash is n raised to power 4 R. So R dash is n raised to power 4. How much times 1/2? A value of n is 2. 2 raised to power 4 into value of R is 2. That means 62 into 2. That is 32 ohm. That is the final answer of this question. Now change in resistance, percentage change in resistance based question है ना. How examiner ask change in percentage change in resistor question. I'm just delivering this concept by taking an example. If change in length of a wire if length is decreased, I'm just changing that question. Length of wire decreased by 10%. Okay, length of wire decreased by 10%. Then
calculate percentage change in resistor, change in resistance, change in resistance. What is the percentage change in resistance? Okay, very easy concept, you can solve it. I'm just changing my marker. Length of wire decreased by 10%. Okay, initial length, I'm just creating two columns here, initial and final. Okay, initial length is L, final length is 9 by 10 L. Why? We know that length decreased by 10%, then we have only 90% length. 90% length in 90 by 100 into L, that is 9 by 10 L. Okay, 10% decrease means length is decreased by 10% and 9 by 10 L. Okay, or if there is increment, if length of wire increase by 10%, then we get 110 by 100 L, because initial length is 100 by 100 L, it means L. Increase by 10% means 100 plus 10 yani 110, 110 upon 100 into L. So new length is in this case 1.1 L length. You can I'm just delivering concept, we can use both concept, decreasing or increasing both. Okay, initial cross section is A and final cross section is, we know that according to volume is constant, I am solving here volume constant, so area into length equals to 1.1 L into A dash, so A dash equals to A by A point 1.1, A by 1.1. okay, because L cancel out from both sides, so new cross section is A dash equals to A by 1.1. okay, new initial resistance is R equals to rho L by A and final resistance is R dash equals to rho L dash by A dash. Okay, so rho L dash, what is L dash? L dash is 1.1 L, 1.1 L upon A dash means A upon 1.1, then we get 1.1 square rho L by A. Rho L by A is R, it means 1.1 whole square R. This is the new resistance R dash. Change in resistance, percentage change in R, that is delta R by R percent. Okay, so delta R by R means R2 minus R1 upon R1, so R dash minus R upon R into 100%, if we are calculating in percentage. R dash is 1.21, square of 1.1 is 1.21, R minus R upon R, that is 100 into 100%, then we get 0.21 means 21%. okay, delta R upon R percent is 21%, percentage change in resistor. अब ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये बताइए, ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये चीज़ सोचिए 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 सोचिए, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है.
ये हुआ बेटा लेंथ इंक्रीज हुई है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ के साथ तो इंक्रीज होता है, तो क्या हो गया है इंक्रीज, 21% इंक्रीज हो गया है। और अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता तो इतना डिक्रीज हो जाता, अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता तो इतना डिक्रीज हो जाता, है ना। तो ये मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि इंक्रीज कैसे निकालना है और डिक्रीज कैसे निकालना है। अब देखो एक क्वेश्चन और किस तरीके से पूछेगा, ये देखिए क्रॉस सेक्शन में चेंज भी दे सकता है आपको कि क्रॉस सेक्शन इंक्रीज बाय 10% या डिक्रीज बाय 10%, रेडियस इंक्रीज बाय 10%, रेडियस डिक्रीज बाय 10%, तो वो सब चीज़ें आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पढ़ने वाला है। What is the effect of temperature on resistance? First we are discussing about effect of temperature on resistivity. On resistivity. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी। तो बताइए इफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रजिस्टिविटी पर, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। दोनों चीज़ होती है, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है ना, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है। मेटल होगा तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और नॉन मेटल होगा तो डिक्रीज होगी। देखो कैसे, फर्स्ट एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं सभी के लिए। इफ रजिस्टिविटी ऑफ रजिस्टर एट T0 temperature is rho naught, resistivity of resistor at T temperature is rho. Then change rationally change in resistivity, ये important है, rationally change in resistivity किस पर डिपेंड करता है। रेशनली चेंज इन रजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हाउ, चेंज इन रजिस्टिविटी इज रो माइनस रो नोट, रेशनली चेंज इन दैट इज रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट। It is the rationally change in resistivity. It depends on T minus T naught. Okay. Change in temperature. Rationally change in resistivity is proportional to change in temperature T minus T naught. So whenever we balance both equation, then we get rho minus rho naught upon rho naught, and we get a constant that is alpha T minus T naught. I am discussing about alpha here. Alpha is thermal coefficient of resistance, resistivity, thermal coefficient of resistivity, okay, and thermal coefficient of resistivity alpha is rho minus rho naught divide T minus T naught, rho naught T minus T naught. This is the formula of alpha. ये ध्यान रखना भैया ना, ये मैं बार बार पूछूंगा क्योंकि अभी ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है।
ये वाला जो टॉपिक है ना थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तुम्हारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए हैं, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट टी माइनस टी नोट, ये मेरे पास में फॉर्मूला आ गया है। तो अल्फ़ा की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ अल्फ़ा? रो से रो कट जाएगा, ये तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। अब इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है ध्यान रखने की, अगर अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा है ना आपको वैल्यू दे रखा होगा, अगर ये अल्फ़ा डिग्री सेल्सियस में तो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना है, और अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और अल्फ़ा केल्विन में है तो आपको ये टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर देना है, यानी जो इसकी यूनिट होगी ना उसमें आपको रखना है टेम्परेचर। तो यहाँ से भी हम क्रॉस करना चाहें तो क्या आ जाएगा, रो माइनस रो नोट इक्वल्स टू रो नोट अल्फ़ा टी माइनस टी नोट। सो रो इज इक्वल्स टू रो नोट प्लस रो नोट अल्फ़ा t minus t naught. Then we get equation rho equals to rho naught 1 plus alpha t minus t naught. The value of alpha decide the value of the nature of material. That material is conductor, insulator, alloy or semiconductor. It depends on alpha. Alpha decide all values that conductor is insulator or conductor. Material is insulator or conductor. So you have to know that this equation, this is the important and दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उससे उसको यूज करूँगा तो भी मेरे को उससे ये बनाना पड़ेगा, है ना, उसको सोल्व करके, है ना। तो मैं डायरेक्ट यही फार्मूला याद रखता हूँ, तो इससे डायरेक्ट मेरे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम एज आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा टी माइनस टी नोट, एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर माइनस आर नोट सेम एज आर नोट टी माइनस टी नोट। अल्फ़ा इज व्हाट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा इज, अब यहाँ पे रजिस्टिविटी था, यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इज़ दैट क्लियर, आपको ये चीज़ क्लियर है? तो मैंने आपको अल्फ़ा के बारे में बता दिया है, रो के बारे में बता दिया है, पूरा काफ़ी आपको डीप नॉलेज दे दिया है। अभी अपन इसके बारे में अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बहुत ही वैल्यूएबल है। ओके, देख लीजिए एक बार आप इसको। नॉर्मली क्वेश्चन है ना क्या होता है, अल्फ़ा पूछ लेता है, टेम्परेचर पूछ लेता है या रेजिस्टेंस पूछ लेता है, एक चीज़ पूछता है। 3 सेट में भी आपको दे देते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। कई बार क्या होता है, मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा, वेरिएबल अल्फ़ा का भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। वैसे तो अल्फ़ा कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो एक वेरिएबल अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट भी आपको लिखाऊंगा मैं, मतलब एडवांस प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी।